Hello everyone, today we'll see article 15 of Indian Constitution. Okay, so let's see this article. So as similar as article 13 and 14, article 15 is also the part of part 3 and which deals with the fundamental right. Okay, so article 15 is also nothing but is right to equality. Okay, so article 14 was also comes into right to equality, that was equal protection of law that we have seen earlier. So this is like also right to equality, which talks about एक मूवी भी आई हुई थी अभी रिसेंट में, आर्टिकल 15 ही उसका नाम था. So what article 15 says, provision of discrimination on ground of religion, race, caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, मतलब किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है किस ग्राउंड में, ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इसके बेसिस पे किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. ओके, सो व्हाट क्लॉज 1 सेज, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. ठीक है, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी का एग्जाम है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो वो यूपीएससी ऐसा नहीं बोल सकता है कि ओके कोई ऐसा मतलब कोई हिंदू है वो नहीं दे सकता है, या किसी भी रेस का है, ठीक है, वो नहीं दे सकता है, किसी कास्ट का है वो नहीं दे सकता है, मतलब वुमेन मैन दे सकता है. प्लेस ऑफ बर्थ मान लेते हैं कि यूपी में कोई एक डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली बोल दे कि वहाँ का पैदा हुआ है, नहीं दे सकता है. So this cannot be done by the UPSC. This is just example I'm giving. Okay, so it can be anything. So based on these things, actually this is very broader. Okay, this thing actually cover everything. Okay, so whatever, because these things will cover everything in India. I mean with respect to discrimination. Okay, so either this all or any of them, it cannot be done. Understood? तो मतलब with respect to this किसी को भी discriminate नहीं किया जा सकता. This is the main point of article 15. Let's see more things is given in article 15. Okay, so what clause 2 says, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to. Okay, subclause A says access to shop, public restaurant, hotel, public place of public entertainment. ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें ये लोग जो हैं, इन लोगों को कभी भी जैसे इन सब चीज़ों के लिए डिनाई नहीं किया. जैसे मान लीजिए एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल हुआ और ना पब्लिक रेस्टोरेंट हुआ, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट, ये ऐसा कोई बोल नहीं सकते. जैसे आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी खा सकते हो, किसी भी होटल में जा सकते हो ना, किसी भी शॉप पे जा सकते हो, कोई भी उस चीज़ के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम लड़की हो या तुम मैन हो या तुम इस कास्ट के हो या तुम इस रेस के हो या तुम इस रिलीजन के हो, वी आर गोइंग टू डिनाई. सो दैट कैन नॉट बी डन. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ this subclause A. Subclause B says the use of well, tank, bathing ghat, road and place of public resort maintained only or partially by the state fund or dedicated to the use of the general public. ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जैसे कोई वेल है, यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, मेंटेन फुल्ली और पार्सली बाई स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की चीज़ है, कोई रिजॉर्ट है वहाँ पे भी. लेकिन जैसे मान लीजिए किसी कोई जैसे मैंने अपना खुद का अपने घर में रिजॉर्ट बना के रखा हुआ है या स्विमिंग पूल बना के रखा हुआ, वहाँ पे मैं डिनाई कर सकता हूँ क्योंकि दैट विल नॉट कम्स इनटू द स्टेट. वो मेरा खुद का पर्सनल हो गया, तो वहाँ पे मैं मना कर सकता हूँ. बट इफ इट इज़ लाइक पार्सली या फुल्ली ओन बाई द स्टेट, आई मीन स्टेट मीन्स लाइक गवर्नमेंट, तो वहाँ पे दे कैन नॉट डिनाई टू एनीवन विद रिस्पेक्ट टू these things. Okay, this is the meaning of that. Now clause 3 says
Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. ठीक है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए नहीं बनाया जा सकता, ऐसा भी ये चीज़ बोलता है. ठीक है, with respect to discrimination only. Okay, now clause 4 says nothing in this article or in clause 2, we have already seen clause 2 of article 29. Now we will see what is article 29. Shall prevent the state for making any provision, any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes. Okay, this is actually the first. इसको ऐड, ये शुरू में नहीं था, तो जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये नहीं था, जब बाद में ऐड किया गया बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. ठीक है, सो दिस इज द क्लॉज 4. नाउ क्लॉज 5, देखिए इसको भी बाद में ऐड किया गया था बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में. स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये नहीं था, बट बाद में ऐड किया गया था. क्या है इसमें? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉजेज जी ऑफ क्लॉज 1 दैट वी हैव सीन अर्लियर, no not earlier, it will come in article 19. you will see what is जी अभी मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट विल सी लेटर what is of clause sub clause G of clause 1 of article 19. Shall prevent the state from making any special provision. ठीक है, by law. prevent, देखिए यहाँ पे prevent ही करने की बात हो रही है. For advancement of any socially or educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribes, in so far as such special provisions related to their admission to the educational institution, including private educational institution, whether added or unadded by the state. ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन वाली बात थोड़ी थोड़ी हो रही है. अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिफर टू द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30. ओके, ये रिलीजियस जो माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एडमिशंस की बात हो रही है. ठीक है, और दिस इज फॉर फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस of citizen and scheduled caste and scheduled tribes class. Okay, so for these as per article 19, for these three people, educationally backward classes, SC and STs, and as per article 13 for education, for the minority educational institution. Okay, so this was actually done by the 93rd Amendment Act of 2005. ओके, सो देखिए इसके बाद ये भी शुरू में नहीं था, बाद में आया था क्लॉज 6 विच वाज डन बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, अब इसमें क्या है, विल सी दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग. कहाँ से प्रिवेंट करेंगे? एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ठीक है, जैसे अभी वीकर सेक्शन को 10%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, EWS जिनको बोलते हैं, उन लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था. ठीक है, तो वो इसमें क्या, इस चीज़ को पहले था नहीं. ठीक है, उस टाइम पे था नहीं. तो इस देखिए अब यहाँ पे मैंने उस समय क्या बोला था कि कोई चीज़ टेक अवे एवरेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे टेक अवे एवरेज नहीं हो रहा बल्कि ऐड कर रहा है. ये सब सारी चीज़ें ऐड किया जा रहा है. ये फंडामेंटल राइट्स में इन सब चीज़ों को डाला गया था, तब जाके जो हमारे जो EWS वाले लोग हैं उन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिला था. ओके, सो दीज थिंग्स हैज़ बीन एडेड इन आर्टिकल 15.
okay, other than the clauses mentioned in clause 4 and 5th. B says, clause B, subclause B says, any special provision for the advancement of any economical weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5, insofar such special provision related to their admissions in educational institution including private educational institution. ठीक है, तो वही जो 10% दिया गया था, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल. ठीक है, मतलब वो जॉब्स में भी वो चीज़ को कंसिडर किया गया था, बट स्पेशली फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होगा, पर वो प्राइवेट में भी होगा, वेदर इट इज एडेड और अनएडेड. Other than state, minority educational institution referred to the clause 1 of Article 30, which in the case of reservation would be added to the existing reservations and subject to the maximum of 10% of total seat in each category. ठीक है, वही चीज़ है, मतलब पहले ही मैंने बोल दिया कि वो 10% जैसे 50% होता है ना, तो वो 50% ओपन होता था, तो उसमें ही आप समझ लो कि एक तरह से 10% जो EWS है उनको दे दिया गया. अब उसमें सिर्फ EWS वाले ही लोग आएंगे जो किसी भी कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, वेदर OBC SC ST, दे एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट दे आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिकॉज जनरल में सब लोग अमीर नहीं है ना. सो दोज हु आर एजुकेशनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दे कैन गेट or maximum reservation up to 10%. Okay, it can be done in public institution or in private institution, whether it is added or unadded. Okay, so this thing was done by the 103rd Constitutional Amendment Act of 2019. Okay, which is state PSCs में कभी कभी पूछ लेता है कि ये EWS रिजर्वेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था. सो दिस वाज एक्चुअली 103. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. ओके, so I think it's the end of Article 15 explanation. There is some explanation is given for the purpose of this article. The Article 16, the economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicator of economic disadvantage. देखिए, इसमें कई जगह पे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिया गया. तब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन कौन से लोग आएंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द फैमिली इनकम ऑफ दीज पीपल. सो दैट विल बी इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. ठीक है, अभी कुछ है, आगे आने वाले समय में कुछ और हो सकता है. आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर हाउ मच मनी अ पर्सन और फैमिली पर्सन कैन बी, आई मीन दे आर अर्निंग. ओके, सो आई थिंक इट्स a 6 lakh something, I don't remember, 6 lakh or 8 lakh something. So if they are earning below that, they will come into EWS category. Okay, but this can be changed in future, that will be notified by the government. Okay, so if any change will be there, so those who will fall on that category means their family income. Okay, so they will come into economic weaker section. ठीक है, तो EWS क्या है उसको यहाँ पे बताया और कुछ नहीं.